Hello friends, welcome to this Throwback 2018 session number 2. I am Nitin Parmar, director at ProTalent. I'm going to discuss this important item which is called Important Committees in the News for 2018. अब ये जो सेशन है वो आपको आइडियली कैसे करना चाहिए, ठीक है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम राउंड यू कैन से 20 प्लस कमिटीज. दिस कमिटीज ऑब्वियसली ये वीडियो के साथ डिस्कशन में आपको पूरी बात समझ ना आए. यू हैव टू रिमेंबर each and every name depending upon your examination. So for example, if you are applying for CLAT related examination, there's hardly any question coming for committee, but still you never know committee ऊपर से कोई question आ जाए, तो वो आपको थोड़ा तैयारी करना है. If you are looking at BBA entrance examination, I think जो corporate level की जो committees है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है. And then if you are looking at any government examinations, then ये पक्का है कि आपको कमिटीज के बारे में तैयारी करना बनता है. So what you should do is simply take this PPT और ये कमिटीज को अच्छे से याद करें. Okay, so what is there? There is a review of competition regulation. So I'm sure you understand there is Competition Commission of India, CCI अवेलेबल है. तो ये CCI के साथ कनेक्टेड है कंपटीशन के रेगुलेशन वाली कॉल इंजेती Srinivas committee. There is another Injeti Srinivas committee which is about corporate social responsibility. So there has to be a proper path for corporate social responsibility. So that way it is very simple information. Another called AJ Paul Raj committee, primarily for giving recommendation to drive India's 5G adoption. So this is very important committee. ये तो बिल्कुल याद रखने जैसी है क्योंकि 5G रिलेटेड न्यूज आता है और ये आपको पता होना चाहिए. अमिताभ रॉय कमिटी which is working on problems of jail and suggest certain reform measures. So this is a star mark for law entrance exam related part. Bhaskar Ramamurthy committee which is suggesting changes in JEE advanced. Then there is B Sesikaran committee which is for food safety and standards, labeling and display regulation. उसके ऊपर बात करेंगे. दे आर वर्किंग ऑन ड्राफ्टिंग ऑफ फूड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन, उसके ऊपर बात करें. राजीव गौबा कमिटी विच इज फोकसिंग ऑन मॉब वायलेंस विच इज हैपनिंग इन अ नॉर्मल मैनर इन आवर कंट्री, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए. रविंद्र धोलकिया कमिटी प्राइमरली फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक डेटा एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनके ऊपर है. ये IIM अहमदाबाद के फैकल्टी है. ई Shri Dharan committee which is very important because this gentleman is known as father of you can say Indian Metro Rail, Metro Man of India के नाम से ये जाने जाते हैं और इसलिए ये प्रोजेक्ट उनको दिया गया है. राजेश बिंदाल कमिटी is primarily focusing on issues related to inter-country removal and retention of children. Okay, so there are legal issues related to that, उसके ऊपर काम हो रहा है. मनमोहन जुनेजा कमिटी is working on CSR provision, very important. Subhash Chandra Garg committee is working on fintech. BBA वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है. MBA वाले बच्चों के लिए भी काफी जरूरी है क्योंकि ये फिनटेक सेक्टर इज अ ग्रोइंग सेक्टर और उसके ऊपर जो कमिटी बनाई गई है दैट इज कॉल्ड सुभाष चंद्र कमिटी. एन गोपाला स्वामी कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर 20 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस फ्रॉम 104 इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक और प्राइवेट मिलाकर, और इनके ऊपर काम करने का जो जिम्मा है वो एन गोपाला स्वामी के ऊपर दिया है. YH Malegaon committee is very important because there is a lot of discussion is happening about bad loan, effectiveness of audit and rising incidents of fraud. And then coming to number 15, Vinay Shil Oberoi committee which is working on modernization of armed forces, and Chandrasekharan task force which is developed for implementation of AI, artificial intelligence. Then social media expansion के ऊपर उमेश सिन्हा कमेटी, आप में से कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सोशल मीडिया के बारे में समझते हैं उनको ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर
जो सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है उसके ऊपर ये कमेटी है। अमिताभ कांत कमेटी इज प्राइमरली वर्किंग ऑन एनपीए का प्रॉब्लम। बैंकों के अंदर जो एनपीए का प्रॉब्लम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसके ऊपर काम करते हैं। उदय कोटक, वेरी इंपॉर्टेंट, उदय कोटक, कोटक बैंक के जो चेयरमैन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन दी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके ऊपर वो रिपोर्ट दे रहे हैं। सुरेश माथुर और इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म, बिजोयो चक्रवर्ती और वुमेन्स हेल्थ केयर, एंड बीबी शेकातकार कमिटी primarily to enhance combat capability and rebalance defense expenditure of the armed forces। इनके लिए ये कमेटी बनाई गई है। So these are the total 22 committees which are in the news. Make sure that you download this from protalentdigital.com, ओके, और इसको आप रिवाइज करते चले, बहुत सारी एग्जाम में आपको ये मदद करेगा। ओके, चलिए, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, एंड दिस इज अ throwback series. Do not forget to come back and talk about the rest of the other modules as well. Thank you very much. All the best.